अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो है रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद मीनिंग, फिर रेलिवेंट प्रोविजन के बाद करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, नीड, उसके बाद नीड ऑफ रूल ऑफ लॉ, उसके बाद डीसी जो है वो उसके बाद बारे में क्या कहते हैं, फिर एसेंशियल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा फॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, application of the doctrine, rule of law as a condition of democracy, rule of law in Islam, and last जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Of law. Everyone is equal in the eye of law. No one is above the law. The entire basis of administrative law rest on the concept of rule of law. It is fundamental concept of in a constitution constitutional democratic state. Constitution of Pakistan provides rule of law. Rule of law means equal protection of law. Everyone is equal in the eye of law. No one is above the law. रूल ऑफ लॉ का मीन है कि जो लॉ है उसकी नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी लॉ की नज़र से ऊपर नहीं है। द इंटायर बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेस्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो कंसेप्ट है, जो बेसिस हैं, वो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पे जो है वो रेस्ट करती हैं। इट इज़ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्टेट। इट इज़ ये जो है ये फंडामेंटल कंसेप्ट हैं ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्टेट, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्टेट का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स रूल ऑफ लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो रूल ऑफ लॉ को जो है वो प्रोवाइड करता है। मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ।
rule of law means supremacy of law. Definition of rule of law. Rule of law means supremacy of law over all citizen rulers and government and all of these are accountable to law. Rule of law means supremacy of law over all citizens, rulers and government departments. Rule of law जो है ये सुप्रीम है तमाम मतलब सिटीजन्स के लिए और रूलर्स के लिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं सब के लिए, और ये सब जो है ये गवर्नमेंट को जवाबदेह भी हैं. रेलेवेंट प्रोविजन relevant provision under Constitution of Pakistan 1973, Article 4 and Article 4 and 25 of Constitution of Pakistan deals with the concept of rule of law. Rule of law in Pakistan. The government and its officials
as well as individuals and private bodies are accountable under the rule of law. Rule of law is the basic principle of Pakistani Constitution. Article 4 and 25 of the Constitution of Pakistan 1973 deals with the concept of rule of law. It is sources it secures the liberty of the citizens of Pakistan. Law is the supreme over all persons, and all persons need to follow it for their convenience. रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में ये है कि द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट बॉडीज आर अकाउंटेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट हैं और जो इसके ऑफिशियल्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं और प्राइवेट जितने भी हैं ये सब के सब अकाउंटेबल हैं अंडर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ जो है ये बेसिक प्रिंसिपल हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 आर्टिकल 2 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 उसका आर्टिकल 2 एंड 24 सॉरी 2 नहीं है 4 है। लेट मी चेक हियर। जो आर्टिकल 4 है एंड 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये डील करता है विद द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के साथ। इट सिक्योर्स द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं उनकी आज़ादी को सिक्योर करता है। लॉ इज़ द सुप्रीम ओवर ऑल पर्सन्स एंड ऑल पर्सन्स नीड टू फॉलो इट फॉर देयर कन्वीनियंस। जो लॉ है ये एक सुप्रीम है तमाम बंदों के लिए, और लोगों को चाहिए कि लॉ को फॉलो करें इनकी बेहतरी के लिए।
नीड ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की जो है ज़रूरत थी वो क्यों पड़ी? नीड ऑफ रूल ऑफ लॉ, the concept of rule of law was necessary for the reason is that in earliest days there was no application of law. Rule of law was needed to abolish the concept of, इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, might is right, रूल ऑफ लॉ की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज नेसेसरी, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़रूरी था। फॉर द रीज़न इज़ दैट इन अर्लीस्ट डेज, पहले जो दौर था, देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ लॉ, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं थी, और रूल ऑफ लॉ वाज नीडेड टू अबॉलिश द फॉलोइंग कंसेप्ट माइट इज़ राइट, जो ये एक कंसेप्ट है कि माइट जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है कंसेप्ट था पहले, तो रूल ऑफ लॉ उस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए आया था। उसके बाद है कि essentials of rule of law, essentials of rule of law, फर्स्ट नंबर पे है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, equality before law, supremacy of law making body, ये इसकी एसेंशियल्स थी। एसेंशियल्स के बाद जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन, एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन,
It is applicable in every civilized society. रूल ऑफ लॉ इन इस्लाम। रूल ऑफ लॉ के बारे में इस्लाम क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ इन इस्लाम। Islam does not believe in creation of privileged classes. Does not believe in privileged classes. Believe in equality. Before law. And govern alike. इस्लाम जो है वो प्रिविलेज क्लासेस पे बिलीव नहीं रखता और बिलीव इन इक्वालिटी पे बिलीव करता है, बराबरी पे जो है वो बिलीव करता है, बिफोर अलाइक, और तमाम जो हैं वो अलाइक हैं, एक जैसे हैं। इस्लामिक जस्टिस। Islamic justice is something higher than the former. Justice Roman law or other human law. Quranic reference. Quranic reference में है कि We made you into nations and tribes that you might to learn each other. We made you
into nations. And tribes. That you might learn to each other. रेफरेंस ये है और नेक्स्ट है वी नेम honored the sons of Adam. इसका है सूरह बनी इसराइल. Rule of law by Holy Prophet, peace be upon him. The Holy Prophet. Holy Prophet, peace be upon him, preached and practiced equality throughout the life. International movement to promote international movement to promote rule of law. फर्स्ट पे है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स.
यूरोपियन कन्वेंशन एक्ट 1950 और सेकंड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। थर्ड पे है दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन 1959। ये था रूल्स ऑफ लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिहार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।